हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है क्या मेरी? हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है क्या मेरी? हेलो ओह, ओह। 4,000 टेस्ट शायद से, लाइक 20% मुझे लग रहा है कि 4,000 को स्वीप करके ऊपर से रिवर्स मार सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लग रहा है कि 4,000 टच करना चाहिए आज या फिर स्वीप करना चाहिए, बिकॉज बायर्स का जो है कॉन्फिडेंस ऑलरेडी मार्केट ने ख़त्म कर दिया है। बिकॉज ऑलरेडी फ्राइडे का डे लो ब्रेक हो चुका है, एंड फ्राइडे डे लो के बाद सेम सिचुएशन जो हमने सीपीआई के दिन ट्रेड किया था, जैसे थर्सडे का जो लो ब्रेक हुआ था, यहीं पर मतलब सेलर्स आ रहे थे। देखो यहाँ पर इसके ब्रेक होने के बाद यहाँ सेलर्स आए थे, एंड जब इसका डे स्वीप हुआ देन यहाँ कहीं से एक बढ़िया से 5 मिनट करने के साथ हम लोग एक बढ़िया रिवर्सल मार्केट में देखने के लिए मिला। बिकॉज मार्केट क्या है, अभी भी रेंज में है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो रेंज में नहीं है, तो रेंज में है। इस कारण हम क्या है, मतलब ऑलरेडी देखो फ्राइडे का जो ये लो है, ठीक है, ये फ्राइडे का जो लो है ये स्वीप हो चुका है, एंड यहाँ पर फिर से क्या है, सेलर्स आए हैं। तो यहाँ पर कुछ सेलर्स बैठे हैं, कुछ लोग या इसके मतलब इसके ब्रेक के बाद बैठे हो गया, एशियन लो के ब्रेक के बाद बैठे हो गए। तो सेलर्स का कॉन्फिडेंस ओवरऑल मतलब स्ट्रक्चर वाइज भी अगर देखें तो वो लोग कॉन्फिडेंट है मार्केट में, ठीक है। एंड आई थिंक कि ये वाला जो बेस बना है ना, ये थोड़ा सा मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आई डोंट थिंक सो कि इसका ब्रेक होना चाहिए, बिकॉज अगर आप इसको देखोगे एंड इसको देखोगे तो यहाँ से जो मतलब रिट्रेसमेंट का जो साइज़ है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट $70 का रिट्रेसमेंट यहाँ से हुआ है, वो भी डबल टॉप की तरफ से बना है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि ये वाला स्वीप नहीं होना चाहिए, बट अभी मार्केट को ज़्यादा पता है कि मार्केट क्या करने के मूड में है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा प्लान सिंपल है आज का। देखो पर्सनली मैं किसी भी ट्रेड में नहीं हूँ अभी तक, बिकॉज मेरा प्लान बाय करने का था, आप सभी लोग जानते हो। बिकॉज मैं क्या सोच रहा था कि एज लॉन्ग एज वी आर अबव फ्राइडे लो, हम बाइंग के इसमें प्लान करेंगे। बट जो कि मार्केट ने क्या किया, एशियन सेशन में पहला लो बनाया, एंड देन प्री लंदन सेशन में पहला लो बनाया, वो भी कहाँ बनाया, नियर फ्राइडे के लो के आसपास बनाया, ठीक है। तो जिस कारण जो है मार्केट में हमें फ्राइडे का लो जो है वो स्वीप होते हुए दिखा। अगर मान लेते कि ये जो लो है इसके करीब नहीं बनते, थोड़े ऊपर ऊपर बनते, जैसे कि मैं कह रहा था कि 85 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है, तो 85 के अबव वो मार्केट सस्टेन करता, देन हम देखते कि ये वाले जो बैठे हैं ना, इनको मार्केट ट्रैप करता। लेकिन जो कि इसने यहाँ पर लो बनाया, तो इसमें कोई डाउट नहीं था कि इसका जो ब्रेक है वो ब्रेक होना ही है, ठीक है। बिकॉज आप सभी जानते हो कि अगर सपोर्ट के आसपास मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है ना, तो वहाँ पर बायर्स क्या करते हैं, मतलब इसका लो बनाकर मतलब एसएल लगाकर यहाँ पर बाय कर लेते हैं। तो यही चीज़ हुई है, तो इसमें कोई मतलब इतना शौक होने वाली जैसी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यही रीज़न था कि मार्केट जिस कर नीचे आया। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन की चीज़ है वो काफ़ी सिंपल है कि मार्केट ने क्या किया है कि एग्जैक्टली अगर आप इसको देखोगे तो जो फ्राइडे का लो है उसके आसपास से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो कभी भी मार्केट क्या कर सकता है, देखो हमें क्या चाहिए, एक बढ़िया कैंडल, लाइक 5 मिनट की एक अच्छी बुलिश कैंडल। अभी आप देख सकते हो कि इसका तो स्वीप किया गया है, लेकिन ये वाला जो कैंडल है वो रेड है एंड वीक अभी भी बड़ी है यहाँ पर। अगर हमें ऐसा कुछ दिखता है, यहाँ से ग्रीन कैंडल दिखती है ना, तो जाके बाय करने में मज़ा आएगा, जो भी जो लो है उसका लो रख कर। और यही मैं प्लानिंग में बैठा हूँ, ठीक है। तो इसका मैं वेट कर रहा हूँ पेशेंटली। एंड अगर मान लो कि प्राइस डायरेक्टली क्या करती है, ये जो जोन मैंने मार्क किया है, ठीक है, इसके ऊपर निकलती है, तो प्लान भी सिंपल रहेगा। इसके ऊपर मैं क्या चाहता हूँ कि एक अच्छी बुलिश कैंडल बने, एंड फिर यहाँ कहीं से ऐसा सपोर्ट लेते फिर जाके हम इसका एसएल रख कर बाय कर सकते हैं। तो ये दो प्लान है मेरे, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को साइकोलॉजी भी समझा है कि क्या हुआ मार्केट में, कि आज मार्केट ने ओपनिंग दिया, कहाँ दिया, 4100 के नीचे दिया, जो कि राउंड नंबर है, ठीक है। एंड राउंड नंबर के नीचे ओपन होते ही मार्केट में काफ़ी लोगों ने क्या किया होगा, सेल किया होगा, काफ़ी लोगों ने यहाँ सेल किया होगा। बिकॉज हाई अगर आप देखोगे तो लगभग 40,900 के आसपास बना है, यानी कि सिर्फ 20 पिप्स नीचे बना है।
जो अपना 4100 का राउंड नंबर है उसके नीचे बना है, एंड बिना किसी प्रीवियस हाई को स्वीप किए बिना ही ये लोअर लो बना के इस तरीके से नीचे आया, देन इसका ब्रेकआउट हुआ, देन नो डाउट कि यहाँ से भी कुछ लोगों ने स्वीप किया है, सेल किया है, तो इनको तो आउट करना मार्केट करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड जो मैंने लेवल निकल के दी थी, जो 65 की लेवल है एंड ऑल्सो 57 की जो लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज करती है आप लोग को ये जो बना है ना, इसको ऐसे हिट होते हुए हमें देखेंगे। अभी वो मार्केट को पता है कि मार्केट क्या आज ही ये रिवर्सल दिखाएगा या कल दिखाएगा, लेकिन आएगा तो श्योर मेरे हिसाब से, बिकॉज डायरेक्टली मार्केट इस तरीके से शायद से नहीं गिर सकता, जैसे कि मैंने आप लोग कहा है कि लास्ट सेशन में ये समझाया था मैंने, ये जो भी लोग यहाँ से सेल करके आए हैं इसके ब्रेक के बाद, इसके ब्रेक के बाद, इनको आउट किए बिना अगर मार्केट 4000 के नीचे की जर्नी अगर स्टार्ट करती है तो इन लोगों के लिए इजी प्रॉफिट हो जाएगा। अभी लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज देखो वी आर ट्रेडर्स, हम तो इन्वेस्टर नहीं है कि हमको मार्केट नीचे गई या ऊपर की हमें फ़र्क पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर हम जो सोच के बैठे हैं अगर उस तरीके से होता है तो प्लान के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, अगर नहीं होता तो ट्रेड नहीं करेंगे। एंड मान लो कि मार्केट डायरेक्टली 4000 के नीचे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसके लिए भी अपने पास प्लान है, तो उस हिसाब से हम अपने एनालिसिस को एडजस्ट करके उस हिसाब से फिर प्लान करेंगे। बिकॉज जो ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जानते हो कि पिछले देखो लास्ट मंथ में, यानी कि ये पूरे मंथ में कोई भी इकोनॉमिकल डेटा जो है रिलीज़ नहीं हुआ, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है। अभी देखो आप अगर फॉरेक्स फैक्ट्री देखते हो तो आपको पता है कि हमारे पास क्या है, एफओएमसी की न्यूज़ है, ठीक है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कब है यहाँ पर आप देख सकते हो, एक वेडनेसडे के दिन इंडिया टाइम के हिसाब से 11:30 बजे के आसपास हमारे पास एफओएम स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी कि पब्लिक की स्पीच है, तो नो डाउट वोलेटिलिटी काफ़ी हाई होगी। उसी के साथ हमें ट्रम्प और वो जो चाइना का जो है उसका जो है मीटिंग है, उनके ट्रेड बॉक्स आई थिंक सो ख़त्म हो चुके हैं तो उनकी मीटिंग है, सो रेट कट्स भी है, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है इस वीक में आने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट एडवाइस यही रहेगी कि जितना आप जो है कैपिटल को प्रिजर्वेशन करने पे फोकस करोगे, जितना आप डिफेंसिव रहोगे एंड मिनिमम लेकिन बहुत ही श्योर शॉट सेटअप पे काम करोगे, तब जाके जो है आपको इस वीक में ट्रेड करने के लिए मज़ा आएगा। अगर आप एग्रेसिव नेचर के रहोगे, कुछ भी ट्रेड करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, तो नो डाउट इस वीक में बहुत बड़ा लॉस आपका होना तय है। तो शांति से रहो, क्योंकि देखो मैंने भी कुछ नहीं किया है, मेरे को देखो मैं थोड़ा जल्दी उठता, थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, तो मैं इसको कैच कर सकता था, ये यहाँ से सेलिंग कर सकता था, बट मार्केट जो कि मैं उठने के बाद मुझे यहाँ कहीं पर दिखी, सो मैं डिसाइड किया कि चलो वेट ही कर लेते हैं, बिकॉज फिर जो प्लान किया है उसी के हिसाब से चलते हैं। बिकॉज लाइव मार्केट में अपना प्लान को चेंज करना, चीज़ों को तुरंत तुरंत समझना, ये थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है, तो इसके लिए वेट ही करो, ठीक है। वैसे आप लोगों ने क्या किया, आप लोग किस में ट्रेड कर रहे हो, आप लोगों का व्यू क्या कर रहा है, आप मुझे ज़रा बताओ कमेंट में, लाइक आप लोगों का प्लान क्या है आज के लिए, आप लोग क्या सोच के बैठे हो। हेलो हेलो, आप लोग क्या सोच के बैठे हो गाइस, ज़रा कमेंट करो, ठीक है। शेयर मी योर प्लान्स, लाइक व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट द मार्केट टुडे, लाइक व्हाट्स योर बायस टुडे, आपका क्या प्लान है, ज़रा मुझे भी बताओ ताकि मैं भी समझूँ कि आप किस तरीके से सोचते हो, ठीक है। देखो भाई, ऊपर से अगर सेलिंग में बैठे हो, यहाँ से सेल किया, ऐसे सेल किया, देन वेल एंड गुड। मैं लाइक यू ऑल नो कि किसी डे लो के नीचे रेजिस्टेंस सबको दिख रहा है, यहाँ कहीं पर इस तरीके से सेल करना मेरी स्ट्रैटेजी तो प्रीफर नहीं करती, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ लाइक रिटेल कॉन्सेप्ट, सो मैं प्रीफर नहीं करूँगा यहाँ सेल करना। ऊपर से सेल किया होगा तो वेल एंड गुड, नो डाउट कि आप लोगों ने सही से काम किया, बिकॉज डबल बॉटम बन चुके थे नियर फ्राइडे लो, सो नो डाउट कि इनको ट्रैप करना था। सो आपने अगर इसमें काम किया होगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें अगर हो, आई डोंट सजेस्ट कि सेल करो, बाकी मार्केट को पता है, बट मैं तो सेल नहीं करूँगा फिलहाल के लिए, तो वेट ही कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि यहाँ कहीं से बाइंग हो, ठीक है, उसी का वेट कर रहा हूँ मैं।
बिकॉज ऑलरेडी देखो इस लास्ट वीक का क्या पैटर्न था कि जो भी लोज थे, लाइक थर्सडे का लो ब्रेक किया, फ्राइडे का लो भी आज ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं और ऊपर से आप देखो ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, लेकिन आज की ओपनिंग का भी ये हाई बनाया। तो ये क्लियर जो है ऐसा मतलब बिना किसी प्रीवियस हाई को स्वीप किए बिना ही गिर रहा है। तो मुझे जो है ये क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा ये बोलते हैं ना कि मतलब सहन नहीं हो रहा है मुझे ये चीज़। बिकॉज कहीं ना कहीं देखो एफ एम सी वीक है, सो आई एम सीइंग अ बिग ट्रैप जो मार्केट में हो सकता है अगले 2 दिनों में। सो जिस वजह से मैं थोड़ा सा कॉशियस होके बैठा हूँ कि जो सोच के बैठा हूँ वही ट्रेड करूँगा, जो नहीं सोच के बैठा हूँ वो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। सो वेरी सिंपल वीक फॉर मी, लाइक वेरी सिंपल प्लान फॉर मी कि मैंने जो सोचा है अगर वो हो रहा है करूँगा। एक बार ट्रेड मिल रहा है, 2 बार ट्रेड मिल रहा है करूँगा। ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करूँगा इस हफ्ते, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट एफ एम सी वीक है एंड यू ऑल नो, अगर आप एक्सपीरियंस हो फैमिलियर हो एफ एम सी के साथ, सो यू ऑल नो कि एफ एम सी वीक कैसा होता है। सो इट्स बेटर कि क्लेवर माइंड के साथ ट्रेड करो और शांत से ट्रेड करो, ठीक है। ज़्यादा रश मत करो इस वीक में। कॉपी ट्रेडिंग मैं स्टार्ट करूँगा अगले वीक से, नेक्स्ट वीक, बिकॉज दिस वीक वी हैव बिग न्यूज़ एंड ऐसे वीक में कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करना मतलब बहुत गलत चीज़ हो जाती है। डोंट वरी, कॉपी ट्रेडिंग मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एंड धीरे धीरे मैं बढ़िया जो है उसको स्लोली स्लोली ग्रो करूँगा आप लोगों के लिए। सो डोंट वरी। यस यस यस, एग्जैक्टली वही मैं प्लान करके बैठा हूँ गौरव का। बिकॉज देखो ऑलरेडी 4100 के नीचे मार्केट खुली है, तो नो डाउट कि लोगों को इजी हो जाता है ना कि मतलब किसी भी की लेवल के नीचे अगर मार्केट खुलती है, बिकॉज मार्केट में एक ही आदमी थोड़ी होता है, बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं। और स्पेशली मैं जो कह रहा हूँ कि वी आर स्टिल इन रेंज, क्या हम रेंज के बाहर निकल चुके हैं? ऑफकोर्स नॉट। सो रेंज में जब तक हम हैं, जैसे ही प्राइस नीचे आएगी डेफिनेटली बायर्स ट्राई करेंगे पुश करने को, जैसे ही प्राइस ऊपर आ रही है सेलर्स ट्राई करेंगे नीचे पुश करने को। सो इसके लिए मैं अपना व्यू क्या करके बैठा हूँ, न्यूट्रल लेके बैठा हूँ। इंट्राडे में आप काम कर सकते हो, लाइक आपको बीच में बाइंग सेलिंग करना है, स्कैल्पिंग करना है, यू कैन डू दिस, बट एकदम से एक लंबा व्यू रख के रखना वो पॉसिबल नहीं है अभी। जैसे अपन ने इसका ब्रेकआउट किया था तो अपन को मालूम था कि 4,000 आएगा, 4,000 के ऊपर भी कहाँ तक जाएगा, ये सब चीज़ें अपन कर सकते हैं। लेकिन व्हेन यू आर इन रेंज, यू नो, प्रीफर कि आप रेंज ट्रेडिंग पे फोकस करो। रेंज ट्रेडिंग मोस्टली कैसी होती है, जैसे प्राइस नीचे आ जाती है बायर्स पुश करते हैं, बिकॉज रेंज में क्या होता है कि सेलर्स एंड बायर्स दोनों की टफ फाइट होती है, ठीक है। एंड एकदम से किसी को जीता देना आफ्टर ऐसा मतलब गिर गया है तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि नीचे गिर जाएगा, तो नॉट पॉसिबल। क्योंकि फिर बायर्स बुरा मान जाएगा ना, बायर्स कब से जो है ट्राई कर रहे हैं एंड आई थिंक मतलब बिना डायरेक्टली उनको आउट किए अगर ऐसा कुछ होता ना तो हम शायद से अपना व्यू कम्प्लीटली सेलिंग में रखते और सोचते कि इसका ब्रेकडाउन हो जाए। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना, किसी का लो हाई स्वीप ही नहीं हुआ है, डायरेक्टली वो लोअर लो स्ट्रक्चर बनाते ही जा रहा है ना, ठीक है। मिनिमम कैपिटल आई थिंक यू कैन स्टार्ट विद $100. $100 is good to start in forex trading. No less than $100, because if you treat it like a business, then $100 is minimum. You can also start with $50, but with $50 you can never make money with this. See, if you want to learn, if you want to, you can only learn with the real money, definitely, because with demo money you can never learn trading, because you have to deal with every single thing. Like you have to deal with psychology, your emotions, greed, discipline, everything. So if you trade with demo money, you don't feel anything while you trade. But if you put your real money on the table, then you will start feeling everything. You will start understanding how to manage your emotions, what you're feeling while you are trading, um, like everything. Like are you a greedy person or not? You are disciplined or not? So you have a control on yourself.
you are doing reverse trading or over trading, you will understand all these things with live capital, and then you will understand what kind of person you are. And after that, when you start working on your mistakes and you start improving them day by day, then how you become the real trader with only real money. No demo trading. Like people think we should start with demo trading. This is stupid. Never start with demo trading. You will never learn trading with demo trading. If you want to start with demo trading, then I will suggest you to start with prop firm, because if you start with prop firm, you will understand like how to manage your capital, how to manage your risk, how to work with percentage. So prop firm trading is sometimes good if you are a beginner, because they will give you capital, you have to pass it, and then they will give you live capital. So without risking 10% of their capital, whatever amount you will make on about 10% above initial capital, you will get 80% of that. So it's better if you start with prop firm, because it costs only $30 minimum. I think $30 you will get $500 of funds. So it's good. Like if you are new, then I will suggest you go with prop firms. Like don't invest your real money. But if you have a lot of money, like let's say you have $1,000, $500, more than that, so you can start with like every week you will start with $50. Every week deposit $50 and try to learn the markets. Another week, if you lose it, another week again deposit $50. So this is how you will learn the markets day by day, day by day. Because every mistake, take it as a lesson. And if you like for example, let's say if you lose today, if you lose today, then treat it as you give fees to market to learn this knowledge. You understand this? Treat it like this, because some people get emotional, some people get angry after they lose money in the market. So just like you make profits in markets, so learn to also take losses in the markets, because there are only two things in markets: either you win or you lose, nothing else. So it's not very rocket science kind of thing. You just have to learn one strategy, you just have to learn discipline, consistency, and all these things, then you will become profitable in trading. ठीक है. So price is near our zone, and let's observe now. Like if we see the good green candle forming over here on 5 minute or 15 minute, then only we'll plan to go long. Otherwise, we'll just watch, because we are not in any position. We are not trying to chase the markets. We have a plan, and if market respect our plan, then we'll initiate our trade. Then we'll place our trade. If market doesn't want to respect, then it's okay. It's not a big deal. Like some people think, oh, I was planning for long and market fell again and again and again. It's not like every day you can't be right. Some days you have to just accept it and learn the markets, like what market is trying to do, what very small things you have to focus on everything every day, and daily take some lessons. For example, if you lose today, then analyze why you lose today. If you win today, then also analyze why you win today, what you make better, what you did better. So every day you focus on this, and you will become a better trader with upcoming time, upcoming months, day by day. It's everyday learning, because even every day I learn. Every day I spend 2-3 hours on charts learning, like how can I be better, or how can I work more with more accuracy. Every day I learn, because this is how you become profitable in long term. If you think like you develop one strategy and now you will become profitable, no, this is not like that. See, understand clear which trading platform. Trading platform, I will suggest you go with Exness. Very good broker. I'm personally partner with them, so you will never face any issues regarding deposits, withdrawals, anything. Just DM me on Telegram or Twitter. I will share you the link, or you can also check the link in the description. Go with Exness. Very good broker and trusted broker. I'm working with them from last 5-6 years. So
No issues at all. uh, in what duration you flip your account? First tell me this. Like from how much, how many, like you started from which capital and you flip it to what? Tell me first this, then I will answer your question. कैंडल तो बन रही है, 5 मिनट पे हम देख सकते हैं कि कैंडल तो बन रही है, लेकिन जिस तरीके से 15 मिनट की कैंडल है, आई थिंक ये मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब 5 मिनट की तो दिख रही है कि ग्रीन कलर फॉर्म हो रही है, बट पता नहीं 50 मिनट में अभी भी वो फीलिंग नहीं आ रही कि प्राइस यहाँ से ऊपर ही निकल जाए, तो इसके लिए मैं अभी भी कुछ नहीं किया हूँ। ठीक है, अभी भी शांति से बैठा हूँ। No, 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 no. We are still planning the trade. We are still looking at the charts. We are still waiting for the confirmation. Then we plan to enter. For now, we are just watching the markets because we want buying from this zone, but on a 50-minute candle. Just like you see this, like this type of candle or this type of green candle, like with good volume candle, not like like this candle. You see this candle like liquidity sweep candle. Also you can see like this type of candle. When you see something like this, then I will plan to go long, then we'll liquidate these sellers. But for now it's not good to buy with this 50-minute candle. So just focus on this candle, like look at this candle. Also look at this candle, like liquidity sweep candle. Like we need, like what I mean, we need good 50-minute candle, like with good volume, or from like kind of, what do you say, this hammer candle or marubozu candle kind of thing, kind of this. After that we'll go long. For now don't do anything because we are very close to 4000, which is a very important level, and there are so many people who are trying to sell gold here, like below this Friday low, already sold, not selling, but there are so many people who are trying to sell gold. Also there are so many buyers who are afraid right now. That's what I can feel. Who are afraid to go buy because they are thinking this market is so bearish and anytime it can give a sweep like this. So many buyers are afraid. And let's see, guys. Like don't think too much. Sometimes it's very bad to think too much. Like focus on the charts. If you see confirmation, then take your trades. If you don't see anything, just don't do anything. Just learn to sit quietly. Because I will tell you one thing. Whenever you see this type of candle like with big wicks, they are not like real base. Real base is always like this. Like if you see hammer candle like this, green candle, or let's say you see something like this full body candle, then and also at the support level. Okay, like if you spot this type of candle on support level, then it's good to buy. If you see long wicks like this, then it's not good candle to buy, to be honest. Like it's a part of price action, and like you can say observation with my past experience.
So whenever you see without without liquidity sweep, market is going up, then sometimes it's risky to buy over that, buy in that area. Yes, but big sell, my brother. I'm planning to planning from the above this level. Like it's my analysis that I want to see the breakout of this before or after FMC Powell's pitch, and then after because after this breakout, so many buyers will come in market, and everyone who try to sell from last week will shift their bias towards buying, and they will start thinking, no, market is still bullish, and it was just a correction, and we'll see the another all-time high. And then from this level, I'm planning to short the gold, and we'll target the 4,000 level. So that's my plan, because I don't think directly breakdown of 4,000 for now, but let's see what will happen, because analyzing the charts is our job, but we should always trade on what we see, not what do not trade what you think, trade what you see. So if you're saying the market is in confusion, then do nothing. Like whenever you're in doubt, then stay out. If you think confident about your trade, punch your trades. Like don't think anything when you're confident. Like when everything is matches with your analysis, your study, then go for long. On 50-minute, guys, good candle is forming, but we'll still wait because we still have 12 minutes left. Even it doesn't matter if we enter late, but see, if we enter late, but if we enter in a right direction, then still that's not a problem. But if we enter in hurry, but with wrong direction, we'll get stop out. So for that, we are still waiting like 12 minutes. We have, if we see 12-minute good candle, then we'll shift to 5 minute, and we'll see something like this, and then we plan for long. All right, I hope you understand. Okay, keep patience, because like I told you, like today we saw the opening below 4100, which is a psychological number. So many people enter below 4100. Like from here we can see the lower low structure, which I think boosting the confidence of sellers, and somehow, and like buyers has lost the confidence in market. They are now afraid, like they think they will get stopped out, because I know there are so many people who has entry from 4,000, because last week we saw the low around 4004, and no doubt that some people have a stop loss below this level, but directly targeting them might be it's not a part of my brand, so that's why I'm not ready for this. But even if you see this, no problem. Hmm. Yes, because I think this week we don't have NFP. Next week we have NFP on November 7th. This week is important because we have the FMC press conference on uh, Wednesday. Wednesday night we have. See, you see this? That's why always wait for confirmation. Like, see here, whenever you try to enter before the candle close, market makers try to stop you out. Like let's see here, almost 70 pips rejection in that 15-minute candle. You see this? And also you see this, like 120 pips single candle, and still we have 9 minutes left. Like within 6 minutes, markets had already completed its 120 pips move in a single candle. So that's why I'm suggesting you trade with patience in this market, because if you try to go aggressive, or if you can't wait for your perfect entries, you will get stop out.
If you are a scalper, then you can do this. But I'm not a scalper. I don't like fast trading kind of thing. I have a patience. I will wait for a good setup. I will wait for perfect entry. Then I will risk my money on the table. Because if setup is not risk worthy, then it's stupidity that to risk your money on the table. So always take risk worthy trades. For example, if you are ready to risk $500 and you are seeing that you will get more than $1,000 for sure, you are very confident. When you have a feeling like this, then you punch your trades. If you don't have this type of feeling, like if you think I might get profit or I might get not, so don't do this. Like when you have a 50-50 mindset, don't do this. When you have more than 70-80% of confirmation, like you will definitely make money, you have backtested this setup, it can go like this, then you should punch your trades. No, I'm not in selling, brother. I think opposite. When people sell, I buy because I can see the liquidity of sellers. Already there are so many sellers who shorted the market below the Friday low. So let's see. Currently not in any trade. From morning, not a single trade. Let's see, man. Let's see. See, I told you. I'm ready to see the breakdown below 4,000 also, and also not ready to see the breakdown. I don't care because I'm not trading. I'm waiting for this setup. If I see this, then I'm ready to trap the sellers who shorted below 4,000 this Friday low, and I'm seeing the recovery in the New York session because any major move because FOMC definitely it's going to be a trap. Even if you see the breakdown below 4,000, market will recover crazy tonight or within the next few hours for sure. 5 minutes more, we'll observe the next 50-minute candle of 5 minutes. If we see the sweep below this in another 5 minutes, and then we'll see the 5-minute candle started recovering above this zone and we close above this green zone, then we'll plan to punch our trades for the target of like this for 50 target, like 50-57 is the first target for us, and it's still, I think it's more than 300-400 pips, so it's good, 5 minutes more for closing of 50-minute candle, so it's better to wait. Let's see. Market volume is also crazy, guys. Like you can see every single day, it's like literally moving more than almost like $100 momentum every single day.
Have you ever seen this before, like $100 every day movement? No, not at. I have never seen this type of movement. Like every single day, $100 gold moving? No. Volume is quite big these days, so that's why you have to, trade with patience and focus on perfect entries only rather than, because these days after entry you can't just take $50 stop losses, because every 1 minute candle is moving $50 quickly. And you also know this, so like taking a trades with perfect risk management and risk reward ratio, it's like impossible like these days. So that's why you have to be very sniper these days, or very patient these days, then only you will make money. If you try to chase the markets, you will lose money this week, this days, because volume is very big. Like you see this 50-minute candle, almost 120 pips movement in a single candle, up and down. Bro, I trade prop firm, but I used to trade prop firm. Like nowadays, I don't care, because I have real funds. Prop firm in beginning, I was trading prop firms. Now I don't. Recently, I have a 150K funded account which I passed to like last week. In a single week, I passed both phase 1 and phase 2. You guys want to see this? You guys want to see the 50K funded, how like on the funding tips dashboard? You guys want to see? I'm still waiting like 1.5 minute more. Let's see like next candle opening. 5 minutes. In 5 minutes it's going up, but still I'm not sure, because we're still below this red area, which is the strong resistance for now. Because like for retail peoples, not for the institutional, because like I told you, below Friday low, everyone went short from this level, so I'm not saying it's a strong resistance, but as long as we are below this, it's not like good to buy, because like I told you, 50-minute candle must sweep this and then close above this, then it's a good candle or price to enter. Hold on, brother. I will give you. Just hold on. Let me just focus on this 50-minute candle. Let's see what it's trying to do. Your account size. Which account size you are trading? So now you are funded, or you are just in a evaluation phase. I think.
So you are now in phase 1 or phase 2? Have you ever passed your fund account? I think if you guys want to try, you guys can try buying here, like very small lot. Like I think it should move up from here. Like as long as we are above 4018, I think this is maybe good price to enter. Not very sure, but I think it will like it it will go up from here, like, and we must target this this like this. SL obviously very big because you can't take small SL in this type of markets. So we can plan this. Good volume, good volume. So let's expect the continuation from here till the target of this. We can take minimum this like 52, 53, because like I told you, we have the liquidity over here which we are targeting. So let's just expect the continuation from here. Let's remove this now, because like I told you, whoever shorted below this expecting like it's a resistance of the Friday low, those who were taking this as a resistance, we might see that they're getting trapped in few minutes. Let's hope for a good continuation momentum, and I'm expecting this 30 300 pips momentum from here. Let's see, guys. Okay, anybody in with me? Anybody in with me? Do let me know in the comment section. Okay. Let's expect this, guys. Okay, 300 pips minimum. Okay, it's going good, huh? It's going good. Let's go. Let's go. Let's see. Like it's already done 120 pips, 120 pips so far, and we are still expecting the continuation momentum. Okay, like still expecting the continuation momentum from the markets, because we have seen the good 50-minute candle, and now we will target this sailors very soon. Let's just go continuously upside momentum we need. We still have 10 minutes left for the this 50-minute candle, so let's see. Let's expect the continuation, guys. Okay, let's shift to the smaller time frame. Let's see what smaller time frame is trying to do, like 3 minutes.
We are targeting this like 4050. Yes, you can still enter, but this is not good price to enter because price is already more than 50 pips up from this candle. But if you want to enter, you can enter with small lot size. You can still enter because we still have the like 20 to 200 pips target is still pending, so you can still enter. But let me advise you, like, let wait for this candle close, like this 5 minute candle close, then plan for your entry. Now wait because you already missed your entries, right? It has to go up now, like it's come on gold, let's go up. Give us some continuation momentum because that's what we are waiting for, huh?
देखो भाई लॉजिक तो अपना सही है कि फ्राइडे के लोग के नीचे जो भी लोग आए उनको टारगेट करने के लिए मार्केट जरूर आएगा। अभी खेल रहा है थोड़ा, कंटिन्यूशन में तो नहीं जा रहा है, बट उम्मीद करते हैं कि जाएगा ज़रूर। ठीक है। ठीक है। जिनका एंट्री हुआ है ना वो क्या करे, होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड करो। इनका एंट्री नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से अगर प्राइस मान लो कि वापस इस एरिया में आती है या इसको ऐसे ब्रेक करके ऐसा कुछ करती है, देन जाके करना ट्रेड। क्योंकि अभी प्राइस देखो वॉल्यूम बहुत है यार, सही प्राइस पे एंट्री करोगे तो ट्रेड में अच्छे से रह पाओगे। राइट नाउ थोड़ा बहुत ऊपर है प्राइस, एंड आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें रश करना चाहिए। एंट्री नहीं मिलती तो भी चलता है, बिकॉज ट्रेड होना ही चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। ओके, नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो गुड ट्रेड, मतलब नो ट्रेड इज ऑल्सो बेस्ट ट्रेड समटाइम्स। सो अगर परफेक्ट एंट्री मिली नहीं है तो वेट करो, और अगर मान लो कि मिस भी हो जाता है तो भी बुरा मत मानना, कल आना। ठीक है, बिकॉज पूरा हफ्ता बड़ा है, अभी भी जस्ट स्टार्टिंग है वीक के ना। 15 मिनट पे क्या चल रहा है? 15 मिनट कैंडल अभी जस्ट नया 15 मिनट कैंडल खुला है ना। आई थिंक अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है और वापस से ऐसा कुछ करता है तो मज़ा आएगा। तो फिर यहाँ कहीं पर एंट्री कर सकते हैं, डायरेक्टली भी बढ़ता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ये जो वीक छोड़ के गया है ना मार्केट, इसको फिल करने के लिए मार्केट जरूर आएगा, लेकिन थोड़ा सा परफेक्ट कुछ प्लान करते हैं। लेकिन यहाँ कहीं पर आता है तो वापस सिलेक्शन दिखता है यहाँ पर तो बाई करते हैं, डायरेक्टली भी जाता है तो भी कोई बात नहीं। लेट्स सी। ठीक है।
पता नहीं है कब ब्रेकआउट देगा, इसको बोलो अभी जल्दी से जल्दी जाओ टारगेट की तरफ, बहुत देर हो चुका है, टाइम पास कर रहा है बहुत मार्केट। फास्ट मोमेंटम दे दे, इसका लिक्विडिटी स्विप कर ले, हम कहानी ख़त्म कर लेना, गोल्ड को बोलना। परेशान हो चुके हैं हम। एनीवेज गाइस, चलो ठीक है, मैं थोड़ा स्ट्रीम को बंद कर रहा हूँ, आप लोग ट्रेड को मैनेज कर लेना अगर हो तो, ठीक है। मिलता हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अपना टारगेट हिट हो जाए। थोड़ा सा अगर प्राइस एंट्री नहीं हुआ है तो थोड़ा वेट करो, मतलब ये जो अभी दो कैंडल बना है इसके नीचे अगर प्राइस आती है एंड यू सी कि इससे इस जोन के बीच में अगर आपको जो है दिखता है प्राइस, मतलब इस तरीके से कुछ दिखता है, देन गो फॉर लॉन्ग, ठीक है। और डायरेक्टली अगर प्राइस ऊपर जाता है तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज प्राइस को धीरे धीरे ऊपर बढ़ना ही है, थोड़ा परेशान कर रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन जाना तो इसको ऊपर ही अभी, ठीक है। एज लॉन्ग एज वी आर अबाउट दिस ग्रीन जोन, फोकस ऑन बाइंग, सेलिंग बहुत हो चुका है आज दिन भर में, ठीक है। सो ये रहेगा प्लान। चलो गाइज, मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को, एंड आई होप कि आपको प्राइस सॉरी प्लान एवरीथिंग सब समझ में आएगा, ठीक है। चलो।